we are going to discuss about the animal cell, another example of an eukaryotic cell. In the previous video, we have already discussed prokaryotic, then eukaryotic, then we have discussed plant cell, and the last topic related to cell is our animal cell, which is the second type example of eukaryotic cell. Now let us see the characteristic feature of an animal cell. So in an animal cell, let us see first what things are present which are exclusively present in an animal cell. So in an animal cell, we are having small vacuoles, and numbers may vary from cell to cell. Maybe it is present or may not be it is present. If it is present, maybe it is present in numerous amount, maybe it is present in one or two. It totally depends. But the only thing that you are supposed to keep in your mind is that in a plant cell there is a big vacuole which occupies almost 90% of the cell area, whereas in animal cell the size of the vacuoles are small and their size and their number may vary. Then the second thing in an animal cell is your lysosome. Lysosome is present, and lysosome is very important because it contains digestive enzymes which helps in the digestion of worn out cell particles. मतलब जो आपका जो सेल का जो ऑर्गेनेलीज है जो कि खराब हो गया, जो कि अब काम नहीं कर रहा, उसको डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देती है, और जो फॉरेन बॉडीज जो कि आपके सेल में एंटर करता है उसको भी फिनिश कर देती है. और समटाइम एंड दिस योर लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज योर सुसाइडल बैग. देन द नेक्स्ट थिंग विच इज प्रेजेंट इन योर animal cell is your centrosomes. So the centrosome is always present near the nucleus and it has very important function to do. Let us first see what is actually the centrosome is. See, the centrosome is made up of a pair of centrioles which lie just near by the cell. Which lies just near to the nucleus. Anywhere nearby the nucleus, the area is not defined, but it will be always present nearby your nucleus. And the pair of centrioles which form centrosomes are all lie perpendicular to each other. मतलब जो आपके दो centriole है वो आपस में एक दूसरे के perpendicular रहेगा और ये हमेशा आपके जो न्यूक्लियस है उसके आसपास ही रहेंगे. Now let us see the important function of the centrosome. So the first important function of the centrosome is that it helps during the cell division. जब सेल डिवाइड करता है उस टाइम ये सेल को हेल्प करता है. Second thing is that it helps in the formation of cytoskeleton structure. We have discussed this in our eukaryotic cell की जो हमारा cytoskeleton structure होता है, जैसे कि आपका माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट, देन योर सीलिया एंड फ्लैजिला, इन सबको बनाने में आपका जो सेंट्रोसोम है वो हेल्प करता है. Now let us discuss the cell organelles which are not present in an animal cell. So what are not present in an animal cell are cell wall, second is your plastids, then is the large vacuole. मतलब आपका cell wall, large vacuole और जो plastids हैं वो आपके animal cell में present नहीं होते हैं, ये आपके plant cell के characteristic feature है. Now तो हमारे animal cell का characteristic feature क्या है? हमारे animal cell का characteristic feature है centrosomes, then is your small vacuole, and then is your cilia, flagella and lysosome. Along with that, one more important characteristic feature is the presence of cell coat. जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बाद में सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन एक जिलेटिनियस लेयर प्रेजेंट होती है जिसको कि सेल कोट बोलते हैं और इसको ग्लाइकोकैलिक्स भी बोला जाता है, और इसका फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का. इसके अलावा जो नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड इज द शेप ऑफ एन एनिमल सेल. तो बेटा जो आपका एनिमल सेल का जो शेप है वो वेरी करता है. इट हैज़ अ डिफरेंट नंबर ऑफ शेप्स अकॉर्डिंग टू द जॉब. मतलब जो वो काम करता है उसके काम के हिसाब से उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसके हिसाब से जो उसका शेप है वो मॉडिफाइड हो जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन animal cell. Now let us draw a typical animal cell. So first we will start by drawing a cell membrane. So this is our cell membrane. So this is also a cell membrane, but this has some important word. I will explain you. Let us first see the cell organelles. Okay, afterward I will explain you. And this is the microvilli.
So it is present just to increase. See, because this is present in a zigzag movement, if I stretch this, it is like this. If I draw like this, so the area will be less. And if I stretch this, it will get a maximum area. So the main function of this microvilli is to increase the surface area. Now, because it is an example of eukaryotic cell, then the first thing that we are going to draw is our nucleus. So let us draw the nucleus. So this is our nuclear membrane. And we know that it has a nuclear pore. So we will just draw this. We know that our nuclear membrane is in the nucleus, two membrane is present, outer and the inner. So I will just thicken it. So this is the nucleus. Then the dense organelle present inside is your nucleolus, then thread-like chromatin material, and the fluid or the liquid which is present inside it is your nucleoplasm. Then we will draw our endoplasmic reticulum. Now on the surface of this endoplasmic reticulum, ribosomes are attached on the surface. So it makes its rough endoplasmic reticulum. And where it is not present, we will call it smooth endoplasmic reticulum. After that, so see here, ribosomes are not present on the surface, so that is your smooth endoplasmic reticulum. After that, we are going to draw our mitochondria. So this is your mitochondria. Mitochondria is very important because it is the site of respiration. So it is also known as the powerhouse of the cell. Then we have Golgi body. And these are Golgi vesicles. Then we have lysosomes only produces the these Golgi body only make your lysosome. So nearby here is your lysosomes. Then we have microbodies present inside the cell. So these are your microbodies, which we call for exosomes. Then we have cytoskeletal structure. So this hair-like structure present nearby the plasma membrane is your microfilament. Then this is your tube-like structure. This is your microtubules. Then in the center, the hair-like structure present. This is your intermediate filament. Then you have free ribosomes. See, these free ribosomes and your rough endoplasmic reticulum both produces the protein, but the protein prepared by your free ribosomes are utilized inside the cell, and whereas your protein prepared by your rough endoplasmic reticulum, it is transported out. Then we have already discussed that centrosomes are the characteristic feature of your animal cell, and this centrosome is present nearby your is your nucleus. So I told you that these are a pair of centrioles and these are perpendicular to each other. So this is your centrosome, pair of centrioles perpendicular to each other. Then you can draw a small vacuole, 1 or 2. So this is your vacuole. Now glycocalyx. So these are the gelatinous layer which will present nearby your cell membrane. This is your cell core. We also call it glycocalyx. It is almost present in all the animal cell, and
its function varies. The most important function is your to protect the plasma membrane. Now the important thing is that we know that this your rough endoplasmic reticulum used to prepare the protein. Then these protein are transported to your Golgi apparatus or your Golgi complex, and here the modification of protein take place, and after that it is filled in the vesicles. These are the Golgi vesicles, and then these vesicles transport this modified protein to outside the cell. So these vesicles start moving towards the here, they reach here. Okay, these are the vesicles which are containing the protein to be exported out. Now these vesicles, this membrane of the vesicles and the cell membrane, both are made up of lipid. मतलब कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन है सेम कॉम्पोजिशन है आपके किसका, आपके ये वेसिकल्स का. ये यहाँ पे जब गोल्गी बॉडी के पास प्रेजेंट होता है तो हम इसको गोल्जी वेसिकल्स बोलते हैं, और जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चला जाता है, मतलब जब ये अपना काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, तब हम उसको ट्रांसपोर्टेशन वेसिकल्स भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स भी बोलते हैं. पर बेटा ये सेम चीज ही है, गोल्जी वेसिकल्स और ये, मतलब जब ये गोल्गी के पास प्रेजेंट है, अभी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, इसमें सामान भर गया है, लोड हो चुकी है ट्रक, लेकिन जब ये पहुंच जाएगा तब इसको बोल देंगे ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स. तो ये आपस में एक दूसरे को टच करेंगे. इसको मैं रख करके अगर अब क्या होता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है, तो ये क्या होगा, इसको डिजोल्व कर लेगा और आपका जो प्रोटीन है ये बाहर चला जाएगा. सो दिस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल is known as the exocytosis. एक्सो मतलब निकलो, साइटोसिस मतलब सेल से, तो सेल से बाहर निकलने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, इसलिए मैंने कर्व बनाया था. दूसरा है कि सेल में आपको मालूम है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेएबल है, मतलब जब सेल को जरूरत होती है तो चीजें बाहर से भी अंदर आती हैं. तो जब चीजें बाहर से अंदर आती हैं, सपोज यू सी let us these triangular shaped substances are ready to get inside the cell. Now how they will get inside the cell? They will come closer and they will get inside this submerged, और आपका जो गोलकार का मतलब कि जो आपका जो डेंस आपका जो ये सी शेप का बना हुआ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें आके फिट हो जाएगी. उसके बाद ये क्या करेगा, इसको पैक कर लेगा. ठीक है, इसको पैक करके अंदर मूव करेगा. तो ये देखिए ये अंदर आ जाएगा, मतलब चीज बाहर से अंदर आ जाएगी. इसने क्या करा, इसको पैक कर लिया और इसने बना दिया वेसिकल. ठीक है, आपको वेसिकल का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, वेसिकल जो होता है इट्स लाइक अ बॉक्स, इट्स लाइक अ बैग जिसमें की चीजें फिल्ड होती है, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड की फॉर्म में फिल्ड होती है. ठीक है बेटा, तो ये अंदर आ गया. तो ये जो सेल के अंदर आने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल के. तो जो सेल से बाहर गया वो था आपका ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स लेकर के. अब जो ये अंदर आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका पिनोसाइटोटिक वेसिकल. ये जो वेसिकल है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोटिक वेसिकल. जो पिनो है, पिनो का मतलब होता है ड्रिंकिंग ऑफ सेल, मतलब सेल ने इसको क्या करा, पी लिए. जैसे हम पानी पीते हैं तो पीनो से कहते हैं पीना, मतलब चीजें अंदर आ रही है. जब आप पानी पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर जाता है. उसी तरह ये जो आपका जो वेसिकल है जिसका नाम है पिनोसाइटोटिक वेसिकल, मतलब दिस इज द ड्रिंकिंग ऑफ द सेल, और आपके सेल ने क्या कर रहा है, इसको ड्रिंक कर लिया. जो चीजें अंदर चाहिए थी वो अंदर आ गई. लेट अस लेबल दिस इज योर पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स. नाउ दिस वाज द इम्पोर्टेंट थिंग. हाँ, आपका जो ये है, ये जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है इसका नाम है माइक्रोविलाई. आपको मालूम है कि माइक्रोविलाई आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. यू ऑल नो दैट जो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है. आपका जो खाना डाइजेस्ट हो गया है उसका एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन होता है. तो वहाँ पे क्या होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है इन द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. क्यों प्रेजेंट होती है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. तो ये उसमें प्रेजेंट होती है, इसलिए ये मैंने बना दिया.
उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो एनिमल सेल होते हैं उसमें सीलिया और फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सारे एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते, टोटली डिपेंड्स। तो आपने सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा होगा, तो मतलब वैसा एपिथेलियल टिश्यू और वैसा एपिथेलियल सेल जिसमें कि सीलिया प्रेजेंट है। तो ये आपका बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, आपके ओवरीज में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे इसका मूवमेंट का काम होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद है आपका फ्लैजिला। जो फ्लैजिला है वो भी सारे एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, वो आपके स्पर्म सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्पर्म सेल को क्या करना पड़ता है, मूवमेंट करना पड़ता है, इट हैज टू रीच द एग सेल टू फर्टिलाइज, तो वो मूवमेंट करता है, इसलिए उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो जो हमने आपके जो फीचर्स पढ़े हैं, जो कॉमन फीचर है वो तो हम आपके यूकैरियोटिक सेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। उसके अलावा जो सीलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल इम्पॉर्टेंट दैट इट विल बी प्रेजेंट इन ऑल द एनिमल सेल। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो सेल का शेप होता है वो उसके क्या कहते हैं कि फंक्शन, उसके जॉब पे डिपेंड करता है। अगर आपका जो सेल है आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो उसको माइक्रोविलाई होगा, स्पर्म सेल है तो फ्लैजिला होगा, आपके इंटरनल ओवरीज में और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होगा तो उसमें सीलिया प्रेजेंट होंगे। तो ये टोटली डिपेंड्स ना। इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है अंदर, वो जो फ्लूइड है बेटा उसको हम साइटोसोल बोलते हैं, लेकिन क्योंकि जब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो सिर्फ फ्लूइड को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग द मटेरियल बिटवीन सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपका जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं आता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोप्लाज्म बोलते हैं। नाउ लेट अस लेबल दिस। सो दिस इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, this is your rough endoplasmic reticulum, this is your nucleus, this is your chromatin material, then this is your nucleoplasm, and this is your nuclear envelope. And why we are writing envelope? Including both the membrane, inner and outer membrane. And this space is your nuclear pore, and this all together forms your nucleus. Okay. Now next is your this is your centrosome, this is your Golgi complex, this is your lysosome, and the important thing, this is your cell membrane. But plasma membrane, cell membrane, both are one thing. Then is your this is your free ribosome. Then this is your peroxisome. Peroxisomes are microbodies. Then this is your vacuoles. This is your vacuoles. You can see the vacuole, the size of the vacuoles are small. Okay, then this is your microfilament. Then this is your mitochondria. Then this is your microtubule. And here this is your intermediate filament, and this fluid which is present is your cytoplasm. आपका cytoplasm क्या है, cytosol plus cell organelles, but
बेटा जो फ्लूइड है उसको हम अकेले को बोलते हैं साइटोसोल। जब हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं तो उसका मतलब है कि आपका सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो भी आपका सेल ऑर्गेनली है प्लस आपका फ्लूइड जो है, दोनों को मिला के साइटोप्लाज्म। अब जो आपकी जो जिलेटिनियस सब्सटेंस है ये आपका हो गया सेल या इसको ग्लाइकोकैलिक्स। सो दिस इज आवर टिपिकल एनिमल सेल। इसमें सारे ऑर्गेनेलीज हैं आपके एनिमल सेल के। इसके अलावा आप इसमें एंडोसाइटोसिस और आपका एक्सोसाइटोसिस दोनों ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बेटा जो आपका एक्सोसाइटोसिस है, ये जो आपका जो वेसिकल है, इसको ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल, सिक्रीटरी वेसिकल, सिक्रीटिव वेसिकल्स तीनों नाम से बोला जाता है। और आपका जो ये एंडोसाइटोसिस में जो वेसिकल सेल के अंदर आता है इसको बोलते हैं पिनोसाइटोटिक वेसिकल। पिनो का मतलब होता है ड्रिंकिंग ऑफ सेल। उसके बाद आपका था माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई मैंने बताया कि इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के साथ साथ ये आपके और भी काम करता है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है, सिक्रीशन का काम करता है। दोनों ही चीजों में एब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन में ये सरफेस एरिया क्या करते हैं, इंक्रीज करके देता है। तो सेल जो अपना काम है हाईली इफेक्टिव वे में उसको कर पाता है। इसके अलावा देयर इज नॉट मच मोर दैट यू आर सपोज टू स्टडी। द इम्पॉर्टेंट थिंग वाज द सेल कोड। ये रेयरली मेंशन होता है। इसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ये जिलेटिनियस है। इसका मेन फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा भी इसका डाइवर्स फंक्शन है, वो सेल टू सेल क्या होता रहता है, वेरी करते रहता है। सो व्हेन यू विल स्टडी इन योर हायर क्लास डेप्थ विल बी देयर, बट राइट नाउ दिस मच इज important for you. And if you find any problem with this animal cell, you can comment me. I will just try to solve your problem. And thank you very much for watching and suggesting that what I should come up with the new videos. Thank you very much and a very good day.